बच्चों, आज हम अपनी 7वीं कक्षा की पाठ 3 सुनो मेरी कहानी पाठ के बारे में जानेंगे। सुनो मेरी कहानी पाठ 1 संकलित है। सुनो मेरी कहानी पाठ में सुनो मेरी कहानी पेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तो चलिए, शब्दार्थ: छाया, छांव, शैडो, नेरळू। प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस। हिस्सा, भाग, पार्ट। तना, वृक्ष का नीचे वाला भाग जिसमें डालियां नहीं होती। स्टेम, स्टेम। जड़ें, वृक्ष का वह भाग जो भूमि में रहता है, मतलब है रूट। वृक्ष का वह भाग जो भूमि में रहता है, इसको कहते हैं जड़ें, रूट। चूसना, रस लेना, रस लेना। टेस्ट, जरिया, द्वारा, थ्रू। भलाई, अच्छाई, गुडनेस। बर्दाश्त, सहन करना, टॉलरेंस। बच्चों, अब मैं पाठ 3 सुनो मेरी कहानी पाठ पढ़ूंगी। आप अपने किताब निकाल के ध्यान से देखिए। पाठ 3 सुनो मेरी कहानी संकलित। आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ। पत्तों के जरिया मैं हवा में सांस लेता हूँ। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, इमली, अगनुस, कटहल, देवदार आदि। आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। मुझे काटकर वह अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। कुछ नटखट लड़के मेरे थने में अपना नाम खोदते हैं। उस समय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ। इस तरह क्या बच्चे, क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। बच्चों, देख लिए ना सुनो मेरी कहानी पाठ। अब मैं पाठ का सारांश बोलती हूँ, एक कहानी के रूप में
कहानी। सुनो मेरी पेट की कहानी। बच्चों, एक दिन पेड़ के नीचे कुछ बच्चों खेल रहे थे। पेड़ के छाया में कुछ लड़कों खेल रहे थे। उस समय एक आवाज आया। बच्चों आश्चर्य हो गए, ये आवाज कहाँ से आया? देखे तो पेड़ कह रहा है। क्या कह रहा है? आइए बच्चों, मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाऊंगी। बच्चों, मेरी छाया में खेलते हुए देखकर मुझको बहुत खुशी मिलती है, जिससे मानव में आत्म, प्राण और शरीर का भाव होते हैं, वैसे ही मुझ में पत्ते, टहनियाँ और तना, जड़ें होते हैं। तुम जैसे मुंह से खाना पीना खाते हो, वैसे ही हम भी जड़ों से पानी और खाना चूस लेते हैं। जैसे तुम भी सांस कैसे सांस लेते हो, वैसे हम भी पत्तों से सांस लेते हैं। जैसे आपको माँ बाप, भाई बहन कैसे रहते, सभी रिश्तेदारों के साथ हंसते हो, खेलते हो, मौज मस्ती उड़ाते हो, है ना? वैसे ही हमको भी कई भाइयाँ हैं, जिनके नाम हैं अबनोस, पीपल, देवदार, आम, कई भाइयाँ हैं। ये सब रिश्तेदारों के साथ हम भी हंसते हैं, खेलते हैं। बच्चों, यहाँ पे अपने दुख को, अपने दर्द को मनुष्य के साथ, बच्चों के साथ बात कर रहा है। पेड़ कहता है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, अपने लाभ के लिए, लोभ के लिए मुझे काटता है, मुझे तोड़ता है, परंतु मैं कुछ नहीं बोलता, सब कुछ उसकी भलाई के लिए सहन लेता हूँ। बच्चों, इंसान मुझे काटकर घर बना लेता है और तरह तरह की उपकरण बनाता है, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। उसकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, उसकी खुशी के लिए सब कुछ सहन लेता हूँ। बच्चों, कुछ नटखट लड़के मेरे थाने पर नाम लिखते हैं। उस समय मुझको बहुत दर्द होता है, दुख होता है, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, उसकी खुशी के लिए सहती हूँ। और कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के लिए उपयोग होता है, और कुछ नटखट लड़के थाने पर नाम लिखते हैं। उस समय मुझको बहुत दर्द होता है, दुख होता है, फिर भी उसकी खुशी के लिए, उसकी हैप्पीनेस, खुशी के लिए मैं सब कुछ सहन लेता हूँ। जो थका हुआ इंसान मेरी छाया में आने से उसकी थकावट दूर कर देता हूँ, और मुझ पर तरह तरह की फूल होते हैं, और इस तरह तरह की फूल देखकर इंसान खुश हो जाता है, और इस फूल को
है। काम बड़े सबका काम आता है। मनुष्य जीवन के लिए पेड़ रहना अति अवश्य है। बच्चों, आज हम सुनो मेरी कहानी पाठ के बारे में जान गए हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें यहाँ सीख मिलती है कि पेड़ों की रक्षा करना हमारा आद्य कर्तव्य है। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को ना काटे। पेड़ों की संरक्षण करना मानव जाति का धर्म है। बच्चों, अब इस पाठ में आने वाले प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। आइए, सबसे पहले बच्चों को कौन बुलाता है? बच्चों को कौन बुलाता है? बच्चों को पेड़ बुलाता है। बच्चों को पेड़ बुलाता है। पेड़ किससे पानी चूस लेता है? पेड़ किससे पानी चूस लेता है? पेड़ जड़ों से पानी चूस लेता है। किसके जरिया पेड़ सांस लेता है? किसके जरिया पेड़ सांस लेता है? पत्तों के जरिया पेड़ सांस लेता है। पत्तों के जरिया पेड़ सांस लेता है। आदमी पेड़ काटकर अपना घर और तरह-तरह के उपकरण बनाता है। पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वह क्या नहीं करता? पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वह गुस्सा नहीं करता। ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಡಿದ್ದರೆ ನಾಡು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರದೂಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. पेड़ों की रक्षा प्रकृति की रक्षा होती है. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಛಾಯಾ, ನೆರಳು, ಶैडो. जो थका हुआ व्यक्ति छाया से, पेड़ की छाया से आने से उसकी थकावट दूर हो जाता है. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೊಂದು ಬೆಂಡಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕುಳಿತರೆ ಅವನ ಎಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮರ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಗಜ್ ಔರ್ ದವಾಯಿಯಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಮರಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮರಗಳು ನಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದವಾಯಿಯಾ ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಔಷಧೋಪಚಾರವೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರ ನಮಗೆ ಮಹಾ
ಮರ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದ ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂಥ ವರ್ಷಧಾರೆ ಮಳೆಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಮರವು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಹನೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಸರ್ಗದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರದೂಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೂಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮರ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರದೂಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮರ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಹಾಗೂ ಬರಗಾಲವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯುಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಷಾನಿಲಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಷಪೂರಿತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಧಾರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮರಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂಥ ಈ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಈ ವರ್ಷಧಾರೆ, ಇದರಿಂದ ರೈತ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಅವನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇರಣೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಲ್ ಆರ್ ಫೂಲ್, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಕ ನಿವಾಸ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. लकड़ी, कुछ लकड़ियां जलाने के लिए उपयोग होता है. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಸೌದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. देख लिए ना बच्चों, पेड़ से कितना उपयोग है, समझ लिए ना? अब सुनो मेरी कहानी पाठ पढ़िए और शब्दार्थों को पढ़कर लिखना है, अभ्यास करना है. साथ ही साथ सुनो मेरी कहानी पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ना है और लिखना है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಜೂನ್ 5ರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡೋಣ.
ವಿನಾಶ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ಮೂಲ ತತ್ವ. ಕಾಡಿನ ಸೊಬಗು, ನಾಡಿನ ಮೆರುಗು. ಮರ ನೆಟ್ಟು ಬರ ಅಟ್ಟು. ಹಸಿರಾಗಿಸಿ, ಬದುಕನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವನಕುಲವಿದ್ದರೆ ವನುಕುಲ. Dear student, please save tree. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ನೆಡುವುದು, ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.